Hey guys, this is Anushri Sinha from CLS Club of Law Students. In this video, I'll be talking about why you should solve past year questions and when you should solve past year questions. So let's start with it. Okay, let's start with when you should attempt them. Firstly, solve PYQs in the initial stages of your preparation. Okay, if you have not solved it yet, please do it right now, and then you can do it like just 1 month before CLAT, because it will show how much you have progressed. Because when you solve it right now in the initial stages of your preparation, you will know कि okay, this question मैंने wrong किया था, but if you when you solve it before 1 month, क्लैट के 1 month बिफोर, देन यू विल नो कि ठीक है, मैंने उस टाइम ये गलत किया था, आज मैं गलत नहीं कर रहा, एंड मे बी अगर तुम वापस वो सेम क्वेश्चन गलत करो, देन यू नो कि अभी भी 1 month है एंड यू कैन इम्प्रूव इट, 1-2 months है एंड देन यू कैन इम्प्रूव इट. ओके, अटेम्प्ट PYQs आफ्टर फिनिशिंग द बेसिक्स. ओके, तो अगर आपको assumptions पता ही नहीं है, आपको इन्फ्रेंस पता ही नहीं है, आपको क्यूटी का बेसिक्स पता ही नहीं है, आप जाओगे PYQs अटेम्प्ट करने, वो सिर्फ आपको स्केयर करेगा. ठीक है, सो नो कि आपसे ये क्वेश्चन सॉरी आपसे ये एग्जाम जो पूछ रहा है, आपको एटलीस्ट उसका बेसिक आइडिया हो कि ये क्या क्या पूछता है. एंड once you know the basics, you can apply whatever you have learned. Okay, and then you can see na if your preparation is actually aligned with that CLAT exam or not. Okay, so whatever you are learning, make sure that आप उसे execute भी कर पा रहे हो, and PYQs are the best way to test that. Okay, give PYQs like a mock, but do not focus on the score. See, it is advisable कि आप PYQs को एक rough like एक standard time limit में दो, जो आपको जो एक CLAT जो आप एक mock को दोगे. But yes, do not focus on the score, because उसका GK आपको नहीं पता होता है, and like like अगर आपको उसमें कम भी आ गए, so it does not matter, because आपका एग्जाम नहीं है वो, like आपका एग्जाम फिर भी दिसंबर में ही आएगा. So yes, give PYQs like a mock, but do not be obsessed with scores. Next is why you should attempt PYQs. Okay, so firstly, to understand what CLAT really wants. आप जो एग्जाम दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि वो एग्जाम आपसे पूछ क्या रहा है. So and PYQs are the best way to know that. I mean, आप उसी एग्जाम के पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, उससे ज्यादा बेटर क्या होगा. So you need to understand what CLAT really wants. So next is it will help you to avoid this stressing. Once you solve PYQs, once you're very comfortable with the type of questions they ask, you will not be afraid of the exam. And वो एक स्ट्रेस होता है ना कि ओ माय गॉड क्लैट है, एक नेशनल लेवल एग्जाम है, so वो नहीं होगा, because now you're very much comfortable with the exam pattern, with the exam question, with whatever the exam throws at you, you are very comfortable with it. Next is to test your prep in the best way. Like to understand that whatever you are preparing right now, whatever the concept you are preparing right now, वो आपके actual exam में कितना आप execute कर पा रहे हैं. And it just test your whole preparation. अगर आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो PYQs, then okay, maybe you need to do better, maybe and like you need to if अगर आप उस एग्जाम में बैठते उस ईयर, तो शायद आप उतने अच्छे से नहीं कर पाते. So you need to know कि your preparation कितना on point पे है, and the best way to test that is a PYQs. But don't take scores to your heart. Okay, it is just a test. First is that you learn to think like CLAT. ठीक है, CLAT जो भी आपसे एक CLAT का एक certain pattern है, CLAT जो भी आपसे आप पे फेंकेगा, आप वो अच्छे से आप समझ पाओगे कि ओके, ये एग्जाम इसने अचानक से इतना हार्ड क्यूटी का क्वेश्चन दे दिया था. मे बी you need to be really prepared for the tough ones and things like that. Okay, so you learn to think like CLAT and understand what the exam is asking you. And lastly, mocks are a reflection of PYQ. So why not you solve the PYQs डायरेक्टली. ओके, लाइक आप मॉक्स भी देते हो तो आप इसलिए देते हो, राइट, कि आप उस एक्चुअल एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाओ, आप उस एक्चुअल एग्जाम को समझ पाओ. एंड PYQs आर द बेस्ट वे टू सॉल्व दैट, to test that, sorry. So yes, like mocks are very much important, but so are PYQs. So please solve your PYQs right now, and then do it 1-2 months before CLAT. It is the best way to test your preparation, and it makes you really prepared mentally for that exam. Okay, so yes, all the best for your CLAT 2026.